जो नया अध्याय है, क्योंकि असंभव हम कह सकते हैं अब कुछ भी नहीं रहा। जो कहा वो करके दिखाया। और पिछले 11 सालों की अगर बात की जाए उसमें किस तरीके से भारतीय रेलवे आधुनिकता की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है और कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज भारतीय रेलवे यहाँ नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि लगातार हर भारतीय को और गर्व की अनुभूति आज यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं जो कि भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो भी इस पल को देख के काफ़ी खुश। और ये वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं और आवाज़ भी आप ये सुन पा रहे होंगे। घाटी में ये जो आज गूंज सुनाई दे रही है, ये गूंज है इस नए उभरते भारत की, विकास की, जो कि लगातार और तेज़ी के साथ हो रहा है। और इसी तेजी के साथ भारत प्रगति पथ पर, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर जिसको बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, विकास की परियोजनाओं को पहुंचाना जहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, इस तरह की बड़ी परियोजनाओं की तो कल्पना कई सालों तक करना बहुत ही मुश्किल था। आतंकवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटते हुए किस तरह से भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी है, उसकी एक नई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद एक तरह से कहें तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, भारत की गतिशक्ति की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हुए, और जिस सपने को उन्होंने देखा था, क्योंकि 2014 के बाद ही इस परियोजना में गति आई है, भले ही उसकी रूपरेखा पहले तय की गई हो, लेकिन मुश्किलें बहुत आई। तेजी अगर आप देखें तो 2014 के बाद ही, क्योंकि शांति स्थापित हुई पूरे इलाके में, विकास की परियोजनाओं को लेकर के एक जन स्वीकार्यता बनी, और उसके बाद शांति के बीच जो ये समृद्धि का सफर 2014 के बाद ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। आज वो कल्मिनेट होता हुआ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पुल के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने। और भारत की इंजीनियरिंग मार्वेल तस्वीरें न केवल मेक इन इंडिया की शानदार सफलता, बल्कि भारत के इंजीनियरिंग कौशल का भी एक ज़बरदस्त नायाब नमूना तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद। तो ये तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में इस वक्त ज़रूर रोमांच पैदा कर रही होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है वो, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ कर चुके हैं। और ख़ासतौर से अब से कुछ समय बाद हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से यहाँ से जो वंदे भारत है वो भी गुजरती हुई नज़र आएगी। लेकिन चेनाब पुल का जो उद्घाटन है वो अब यहाँ पर हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय तिरंगा, भारत की आन बान शान, वो यहाँ लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब पुल का उद्घाटन किया, देश को इसको समर्पित किया, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आखिर ये विकास सेतु का एक प्रतीक नज़र आता हुआ, और साथ ही साथ ये नज़र आता हुआ कि भारत जो है वो कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज पहुंच चुका है, तकनीक के शिखर पर आज पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ चिनाब, बल्कि अगर हम बात करते हैं अंजी ब्रिज की भी, जो कि अपने आप में काफ़ी खास है, उसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये वो अलग अलग टनल जो हैं, यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अंजी ब्रिज, केबल स्टड का पहला ब्रिज, इसका उद्घाटन यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों ही जो पुल हैं, चेनाब और अंजी ब्रिज, उनका उद्घाटन अब प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अंजी ब्रिज जो कि हमारा पहला केबल स्टड ब्रिज है, और यहाँ भी
हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जो इंजीनियरिंग का कमाल है वो नज़र आता है। आप देख सकते हैं ये 96 केबल्स जिनके वजह से ये जो पूरा ब्रिज है कैसे एक सपोर्ट इसको दे रही हैं। ये जो तमाम केबल्स हैं, करीब 96 केबल्स जिनका इस्तेमाल इसमें किया गया है। और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे जो और वो तकनीक है जो कहीं ना कहीं अब जिसका निर्माण अब होने लगा है, खासतौर से एनजी ब्रिज की जब हम बात करते हैं, करीब 331 मीटर इसकी ऊंचाई है और 725 मीटर की लंबाई और 96 केबल जैसा हमने आपको बताया। और इसका उद्घाटन आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर चुके हैं। और यहाँ भी ये जो पुल है इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो ये पुल भी करीब 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जो हवाएं I have been shouting since 2023 that learn ChatGPT, learn AI tools. Many people followed my advice. To be precise, more than 1 million people have followed my advice and gave me average rating of 4.92 out of 5. And people who are not accepting it, they are accepting their fate of getting laid off. You still have time on your hand. You can still join my AI tools workshop and learn what kind of risk AI possesses. Not only that, how you can use AI for your own benefit to get an accelerated career growth. Not only that, how you can 3x your salary by using and by leveraging AI. Hi. My name is Aditya Kachwe and I am an alumni of IIT Kharagpur. I am someone who is absolutely passionate about AI tools and ChatGPT. That's why I have personally used more than 1400 AI tools in past 6 months and found 10 most useful AI tools for every working professional, which can save you up to 95% of your time. If you want to learn the same, I am going to conduct a workshop of 3 hours just at ₹9. So click on the link below, sign up for my workshop. I'll see you inside my workshop. We have come from India with a delegation of 7 members of parliament and 1 ambassador. And we, in the 7 members, represent 5 political parties, 7 different states. Our example. There you are. 7 different states, 3 different religions. It's a diversity of India. But we are united in the message we bring, and that's what I'll be talking to you about in a minute. Our new ambassador has just presented his soft credentials this morning. May I briefly present my colleague, Mr. Bhuvaneshwar Kalita is a senior member of parliament from Assam in the northeast of India. Mr. Sarfaraz Ahmed is from Jharkhand in the east as well. Taranjit Sandhu is our former ambassador in Washington till last year. On the left is Ambassador Dinesh Bhatia. Then we have Tejasvi Surya, who is a member of parliament from Bangalore. To his left, Shashank Mani Tripathi, who is a member of parliament from a state that has more people than Brazil does. UP, Uttar Pradesh. I was trying to explain to my barber today, where I went, that India has about 1/3 of our territory, but 6 times our population. People, exactly. I envy your lack of density. And of course, hundreds and hundreds of years of civilization before Brazil was even known. That is true, sir. Very, very proud to recognize that. And finally, Harish Balyogi, who is from Andhra Pradesh, as you know, in the southeastern coast. So we represent, in many ways, the diversity of India. And the reason we have come is very much to seek greater sympathy and understanding on the part of our friends. And also countries that are not necessarily our friends, but you are in the high friends category, for our situation in recent months. In particular, the really, really serious attack on our country by terrorists in Kashmir, in a place called Pahalgam, on the 22nd of April. I must say that we saw the statement by Brazil. We were also very touched by President Lula telephoning our Prime Minister personally to express his concern and condolences.
But as you know, in the couple of weeks that followed, absolutely no action was taken to bring the perpetrators to heel or even to look for them in Pakistan. We have identified 4 of them that crossed over from the other side, but there's absolutely no effort made. So finally the government decided it had to send a very strong message. And this is why on the 7th of May, India struck 9 terrorist bases. And I say this very carefully. You know also from your years at the United Nations, and I think this is the first time I'm seeing you in an Indian capacity. I've always met you as a UN official. Let me say that here we are looking at organizations listed by the 1267 Committee at the UN. These are organizations whose terrorist standing is not in doubt. They're also on the terrorist designate list of the United States government. And their headquarters, base camps. In the United Nations also. Yes, in the sanctions, terrorist sanctions committee, 1267 committee. So I just wanted to say that we chose targets very carefully, where every one of them was clearly and explicitly linked to, or the base of, or the training camp of one of these proscribed organizations. Second, we took great care to do so at night, 1:05 to 1:30 in the morning, to minimize any risk of collateral damage, civilians and so on. Normal life was, everyone should be asleep at that time. And then we also explicitly avoided any Pakistani government target, any civilian target, and any military target. So the whole idea was to signal we are not trying to start a war, we are just conducting retribution for an act of terror, which was a really vile act. 26 people killed. They singled out the men on the basis of their religion. They shot them dead in front of their wives and children. It was really horrendous. And it was meant, of course, to do